So this is a small video on cold chain and about cold chain from the AEEE, and just a small video I'll play from post-harvest management point of view. It is in Hindi, so hopefully people can understand. क्या हाल चाल? सब ठीक है रेखा बहन, आप सुनाओ। बस घर पर तो सब ठीक है, पर थोड़ा फसल की तकलीफ हो गई है। अच्छा, क्या हो गया फसल को? वही उर्मिला बहन, ना सही भाव मिल रहा और ना ही कोई खरीदार। अच्छा, कौन सी फसल लगाई थी आपने इस साल? सारी हरी सब्जियां लगाई थी, बैंगन, भिंडी, लौकी, टमाटर। मैंने भी हरी सब्जी ही लगाई थी। मुझे तो सही भाव मिले मेरी सब्जियों के। ऐसे कैसे उर्मिला बहन? मेरी फसल ताजी थी। मैंने फसल की कटाई के बाद इसका रखरखाव भी अच्छे से किया था, शायद इसीलिए। मैंने भी तो फसल का रखरखाव सही से ही किया था। अच्छा, क्या उर्मिला बहन, आप मेरी फसल देखकर बताएंगी कि क्या कमी थी जिसके कारण मुझे सही भाव नहीं मिला? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं शाम को आती हूँ 5 बजे। ये देखिए बहन जी, बैंगन। ये बैंगन थोड़ा भी नहीं बिका क्या? 150 किलो जितना हुआ है, पर उससे सिर्फ 30 किलो ही बिका, और वो भी सिर्फ 12 रुपए प्रति किलो। मैंने तो बैंगन 18 रुपए किलो में बेचा है। पर फिर हमें इतना कम दाम क्यों मिल रहा है? क्योंकि तुमने अपने बैंगन का रखरखाव सही से नहीं किया रेखा। वो देखो, जो बैंगन मैंने बेचा, ये उसकी तस्वीर है। अरे उर्मिला जी, आपके बैंगन की फसल तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, पर कैसे? क्योंकि मैंने फसल की कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकें अपनाई, यानी फसल की कटाई के बाद ताजा रखने के तरीके। क्या करना होता है इन तरीकों में? सबसे पहले तो हमें हर फसल की कटाई का सही समय का पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी फसल अगर सही समय से पहले या बाद में कट जाए तो वो फसल खराब हो सकती है। इसका असर फसल की रंगत, साइज और दिखावट पर भी पड़ता है, जिस वजह से मार्केट में रेट भी उसी अनुसार मिलता है। फिर कटाई के बाद हमें पहले तो अच्छी और स्वस्थ दिखने वाली सब्जी या फसल को अलग कर लेना चाहिए, ताकि कोई खराब फसल अच्छी फसल पर ना असर करे। फिर उसे साफ पानी से धोने के बाद फसल को किसी छांव वाली जगह पर रख देना चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े। नहीं तो इससे बैंगन या किसी भी अन्य फसल के रंग पर असर पड़ सकता है। धुलने के बाद हर फसल को उसकी विशेषताओं के अनुसार पैकिंग करना चाहिए। मार्केट में भाव ज्यादा मिलने का ये भी मुख्य कारण है। उदाहरण, जैसे लौकी को न्यूज़पेपर या किसी अन्य पेपर में लपेटकर प्लास्टिक के क्रेट में रखने से कोई दाग धब्बा या कट नहीं लगता है। इससे उसका भाव भी मंडी में सही मिल जाता है। अगर आप इसे बोरे में रख के ले जाते हैं तो इसके टूटने, कटने या फटने का ज्यादा चांस होता है। इसीलिए मुझे लौकी का भाव भी सिर्फ 8 रुपए किलो मिला मंडी में। हाँ, अगर सही तरीका अपनाओगी तो आपको भी अच्छा भाव मिलेगा। मैंने तो 13 रुपए प्रति किलो में बेचा। और आखिर में, जिस भी फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाओ, उसे भी अच्छे रखरखाव के साथ ही ले जाना। इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उर्मिला जी, ये काफी मददगार थी और मैं इसका जरूर पालन करूंगी। So yeah, thank you for watching this video. Hopefully, you might have found it even helpful in terms of awareness point of view. Now, coming to this webinar, I would like to introduce Mr. Anand Jha uh, from APEDA Varanasi. So Anand ji, can you hear me? Hello, good morning. Yeah, hi, good morning, Anandji. So, thank you for joining this webinar, and thank you for your valuable time. So, now, before delaying even further this event, I would request you to please start discussing on the topics which we shared with you, so that our audience can also get those useful insights from APEDA and team. So, over to you, Anandji. Thank you.
Hello. Yeah, As we hi. discussed yesterday, we Yeah, can go with the fourth point. We can start with the fourth point. That is the okay, registration procedures for the APEDA and export oriented certificate. sure. Mr. Anand, you Here, can here initiate with that me, discussion. Mr. Subham. He can explain of the procedures. Yeah. Hi, Mr. Shubham. Good morning. Good morning. How are you? आप Good, लोग good. कैसे हैं? All good. Hopefully all the attendees are comfortable with Hindi and English both. Yeah, I think it can work. So as I've gone through the points mentioned on the text which you have shared with us. A couple of things are relevant to us. So the registration process, the financial assistance schemes, I will give you the crisp inputs on that point. Apart Okay, from that, the importance of cold chain, Dr. Singh will join and he will give you the crisp informations. ठीक है? sure. So I would initiate with the registration process. There are two registration processes which is required for becoming an exporter. Considering that any firm is registered as an under the Company Act, we will be initiating considering that the any company is registered in the Company Act, right? अगर कोई मतलब हम लोग अभी जो अभी बात करेंगे हम लोग ये चीज को कंसिडर कर लेते हैं कि कोई भी फर्म है वो कंपनी एक्ट के अंडर में चाहे वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के एज एन इट इज रजिस्टर्ड, राइट? So to be very precise, we would start with the considering the FPOs, farmer producer organizations, which is too relevant to us, है ना? अभी तो बहुत सारे फर्म्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक निर्यात कैसे कर सकता है और निर्यातक कैसे बन सकता है, हम लोग इस पे भी प्रकाश डालेंगे, ठीक है? सो जो सबसे पहला लाइसेंस होता है, जो पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ज़रूरी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, once he is having an active email ID and phone number, he can opt for import export code through DGFT, Directorate General of Foreign Trade. Import export code is the preliminary process which is required before the APEDA registration. कोई भी चीज अगर निर्यात करना है या आयात करना है, import या export करना है, तो it requires the IEC certificate. Import export code is required. It is the primary and utmost requirement, right? अब इसके लिए लगेगा क्या क्या, इसकी फीस कितनी है और इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इस पे हम लोग अगर प्रकाश डालें तो इसकी जो फीस होती है दिस इज 500 रुपीज, वैलिडिटी इज लाइफ टाइम, एंड दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इज आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑफ द फर्म. सपोज इफ इट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म तो जो पैन कार्ड उसके प्रोप्राइटर का होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड. आधार कार्ड, आधार कार्ड इज ऑल्सो एक जगह पे ऑप्शन होता है, तो हाँ, और जो भी डायरेक्टर्स के पैन डिटेल्स हैं वो सब इनपुट चाहिए होंगे इफ इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट एक हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का या फिर टेलीफोन का रेंट डीड, सेल डीड कोई भी चाहिए होगा एज एन एड्रेस प्रूफ. फर्दर इन सभी इंफॉर्मेशन को फीड करने के बाद द पर्सन गेट्स एन IEC सर्टिफिकेट एट द कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है? थ्रू DGFT. DGFT portal is dgft.gov.in. The portal is dgft.gov.in. Once the firm is registered with DGFT having an IEC, he can come up with the IEC code to APEDA's RCMC. APEDA का जो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, अभी तो उसको हम लोगों ने 2 प्रोसेस पे कर दिया है, हम लोगों के पास भी हो सकता है एंड एट DGFT पोर्टल ऑल्सो. सो मैं अपने APEDA के जो भी पोर्टल पे जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है मैं उस पर बता देता हूँ. सेम जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड है और वो IEC का डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद आप उस पे जो है रेंट एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट जो भी है, जो भी डीड है फॉर एड्रेस प्रूफ, वो आप लेकर के APEDA के RCMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं. APEDA के RCMC की जो वैलिडिटी होती है डेट इज 5 years एंड द कॉस्ट इज 5000 प्लस 18% GST. 5000 रुपया प्लस 18% GST जो है 5900 रुपीज इज द टोटल कॉस्टिंग फॉर द APEDA सर्टिफिकेट. Once you are registered with APEDA, you are eligible to get the export commodities to different nations. ठीक है? This is the basic procedure. Now अभी तो ये registration का process हो गया. Once एक बार जो भी फर्म है वो APEDA के साथ RCMC ले लेता है तो he or she can export the commodity to different nations. ठीक? नाउ ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई. अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स की बात करते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है.
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी डेवलपमेंट। जो रेलेवेंसी है अगर कोल्ड चेन की अगर हम बात करें तो वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। एंड देयर इज दी सब्सिडी। अगर हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ पैक हाउस डेवलप करने के लिए हमारे पास जो भी सब्सिडीज हैं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोग देते हैं अप टू 75% इन द लैंडलॉक्ड टेरिटरीज एंड 40% इन अदर स्टेट्स जो भी कोस्टल एरिया में है। अगर लैंडलॉक स्टेट यूपी की अगर हम बात करते हैं तो अप टू 75% फॉर द जनरल कैंडिडेट। अगर कोई गवर्नमेंट का फर्म अगर अप्लाई करता है तो अप टू 90% 600 CR हम लोग 600 लैक्स मतलब 6 CR तक हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम लोग का फाइनेंशियल असिस्टेंस है। अगर कोई प्राइवेट की बात करें तो अप टू 75% और 2 CR ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर मार्केट डेवलपमेंट। इसमें मार्केट डेवलपमेंट में शॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन्स आ जाते हैं, जो भी पैक हाउस में है, वेपर ट्रीटमेंट के लिए आता है, रेडिएशन फैसिलिटी आती है, कोई भी चीज़ें आ। इसी में हमारे पास फॉर कोल्ड चेन के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्री कूलिंग चैम्बर्स अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं एट दी पैक हाउस या फिर किसी भी एक जगह पे मिसिंग गैप के नाम पे, तो वी ऑल्सो प्रोवाइड दी असिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई प्री कूलिंग चैम्बर्स या फिर कोल्ड यूनिट्स लगाना चाहता है व्हीकल्स के लिए तो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, तो फॉर दैट ऑल्सो अप टू 2 CR और 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल वी डू प्रोवाइड। इसके लिए करना ये होता है कि किसी भी आप एक्सपोर्ट से उसका जो DPR है वो बना करके आप हमारे पास सबमिट करिए। वी विल सेंड इट टू वी विल post figuring out the importance, we will submit it and forward it to our head office। वहाँ पे हमारी एक टेक्निकल कमेटी होती है, एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल अप्रूव दी प्रपोजल। वो लोग एग्जामिन करेंगे और वो लोग फिर अप्रूव करते हैं। ये हमारे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो गया। इसी में अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी लैबोरेटरीज के लिए भी, जैसे कि आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल इवन उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी उस तरीके का लैबोरेटरी नहीं है, एक्सपोर्ट क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की लैबोरेटरी नहीं है। फॉर डेवलपिंग द लैबोरेटरी वी ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस। द कंपोजिशन इज सेम, अप टू 75% 2 CR फॉर एनी प्राइवेट प्लेयर। और अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे यूपी मंडी परिषद हो, चाहे आरफ्रैक हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की विपणन हो, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की NHB या फिर कोई दूसरी संस्था हो, अगर वो अप्लाई करती है तो अप टू 90% और 6 CR तक का हम लोग टोटल DPR कॉस्ट का हम लोग असिस्टेंस देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर एग्जांपल की बात करें तो बनारस में एक पैक हाउस हम अभी डेवलप हुआ है। उस टाइम में हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं था, लेकिन अगर उस तरीके का पैक हाउस अगर कोई डेवलप करना चाहता है तो वी कैन प्रोवाइड दी असिस्टेंस, हम लोग असिस्टेंस दे सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर इसी तरीके का हम लोग अगर एक डेमो देखना चाहें तो एक हम लोग पैक हाउस वहाँ पे अप्रूव किए हुए हैं इन भदोही संत रविदास नगर, वहाँ पे एक पैक हाउस डेवलप हो रहा है। ठीक है। लास्ट मार्केट डेवलपमेंट के लिए जो तीसरा कंपोजिशन हम लोग का फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आता है वो हम लोग का लास्ट में है। और उसमें अगर हम लोग देखते हैं अगर कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर दूसरे देशों में जा करके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहता है, एडवर्टाइज करना चाहता है, किसी ट्रेड फेयर में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ही कैन कम अप विद द रिक्वेस्ट विद द प्रपोजल टू एपिडा। हम लोग उसको टेक्निकल कमेटी के पास भेजते हैं। मीनवाइल टाइम से पहले, पर्याप्त टाइम से पहले इसका एक प्रपोजल हम लोग के पास आ जाए तो अप टू जो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है अप टू 50% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप टू 2 लाख रुपीज हम लोग उसका रिम्बर्समेंट करते हैं। दिस इज फॉर दी हम लोग का थर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये तीसरा है। दैट्स ऑल हमारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है। रेस्ट यू कैन फॉरवर्ड इट। Thank you, sir. Thank you. Sorry to interrupt. अभी जो भी इसके बारे में कोल्ड चेन के लिए होगा तो CB सिंह सर will come and he will continue. ठीक है? Okay. If any queries you can please raise it. So I will unmute Mr. Amit Shukla. He is from Vegfed Tirhut Union from Bihar. I think he has raised his question, so I will unmute. Yeah. So I think I have given you rights, Mr. Shukla. You can unmute yourself and you can ask your query to Mr. Shukla. Thank you. थैंक यू सर। सर हम लोग एक बेसिकली कोऑपरेटिव का हम लोग का स्ट्रक्चर है, 3 टायर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है। हम लोग बिहार में वेजफेड के नाम से काम कर रहे हैं और हम लोग का लाइसेंसिंग प्रक्रिया ये सब कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि
हम लोग नेपाल का हम लोग मार्केट अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल का हम लोगों ने एपीडा का डेटा देखा है, करीब करीब साल का 100 करोड़ ऑन एन एवरेज एपीडा के थ्रू सप्लाई होता है। और नेपाल जो है बिहार के जस्ट बगल में है, तो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी सुटेबल है, जहां हम लोग नेपाल के साथ वेजिटेबल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हम लोग रिसेंटली कुछ वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड किए थे इंडियन एम्बेसी के थ्रू, और वहाँ पे मंडी एंड देन ट्रेडर्स के साथ काफ़ी सारी हम लोग की मीटिंग हुई थी, और कोऑपरेटिव के जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी। सो इस फील्ड में हम लोग जो है ट्रेड का काम चालू करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग का ऑफिशियली वो सब चालू हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों को क्या क्या फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है, क्योंकि ये हम लोग का सिर्फ ट्रेड है और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छा सवाल है शुक्ला जी आपका। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो फ्रॉम 2021 टू 2026 जो भी हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस है, दिस इज फ्रीज्ड अप टू दिस 3 एक्सटेंट ओनली। ये 3 पैरामीटर्स जो हमारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और क्वालिटी डेवलपमेंट, इन्हीं चीज़ों पे लेके अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो बिहार में भी कोई पैक हाउस उस तरीके का नहीं है इंटरनेशनल लेवल का। क्योंकि आप नेपाल में भी ट्रेड कर रहे हैं तो नेपाल का जो एसओपी है, नेपाल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन आप अगर किसी डेवलप नेशन, अगर यूरोपियन नेशंस में अगर आप करना चाहते हैं, गल्फ में करना चाहेंगे, तो वो फिर डिमांड करेंगे फॉर क्वालिटी पैकेजिंग। ठीक है, तो उस लिए आप अगर पैक हाउस लगाना चाहते हैं तो वी डू हैव दी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स। आप एक प्रपोजल के साथ हमारे पास आइए, हमको सबमिट करिए, वी विल श्योरली ट्राई टू एक्सपेडिट इट एंड हेल्प यू एट द सर्टेन एक्सटेंट। सर हम लोग पैक हाउस के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशंस हो रही है, और हम उस पे काम कर रहे हैं, एंड देन बहुत जल्दी हमने AEEE को भी इसको बात करने की कोशिश की है, हम लोग उनके साथ भी डिस्कशंस कर रहे हैं। सो अभी जस्ट हम लोग मतलब क्या साइज होगा और क्या होगा वो अभी हम लोग फाइनल नहीं किए हैं, बट लोकेशंस फाइनल कर लिए हैं कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करना है और ये करना है, वो सब हम लोग फाइनल कर लिए हैं। एंड बहुत जल्दी हम लोग आपको डिटेल्स हम लोग शेयर करने वाले हैं। एंड इन बिटवीन हम लोग सीबी सर से बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एक बार विजिट करके, जरूर जरूर, कभी भी देखिए, हम लोग एक बार बनारस विजिट करके, Banaras is the adjacent area. Banaras is the adjacent territory of Bihar. So I would request all of you, जो भी participants बिहार से हैं और पूर्वांचल से हैं। हम एक बार बनारस गए थे, विजिट किए थे, लेकिन बट ऐसा सिचुएशंस हुआ हम आपके पैक हाउस नहीं गए थे। बट ये टाइम हम लोग सिर्फ पैक हाउस के लिए 2 दिन के लिए हम लोग टाइम लेके जस्ट टू सी कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बिहार में। सर बिहार एक बहुत बड़ा वेजिटेबल्स का बेल्ट है, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत है और हमारा डैमेज भी बहुत है, क्योंकि प्रॉपर पैक हाउस चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है नहीं होने के कारण डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय भी बहुत हो जाता है, वेस्टेज बहुत है। सो हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है कि भाई पैक हाउस में क्या क्या चीज होता है, और शान जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू शुक्ला जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी इस क्वेरी को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्रशांत जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कोऑर्डिनेट द विजिट ऑफ शुक्ला जी एंड टीम टू वाराणसी, so that they can get the exposure of a pack house based in Varanasi. ठीक है? Thank you, रिक्वायरमेंट्स हम लोग सेंड कर देते हैं सर। हाँ, तो इसको जल्दी से हम लोग प्लान कर लेते हैं, that would be very beneficial for the stakeholders. ठीक है? Any other query? So there are very 2 more queries which people want to know. One is like what subsidies you have discussed. There's Mr. Deepak Kumar Tudu. He wants to know that are there support schemes for any small cold rooms? It is there. If somebody wants to put a 10 metric ton cold room, or especially adding to his question, we want to know for any energy efficient cooling solution, is there any specific subsidy from APEDA? I don't think so. There is any specific subsidy for energy efficiency, but if you want more details, there the financial assistance schemes of APEDA is flagged on the APEDA website. You can go and have a look on that. Further, if any query is there, we will surely expedite that and we will try to sort it out at our level. Okay? Sure. So from energy efficient point of view, what we mainly want to know is, sir, that there are solar cold rooms also available.
And what we read on the APEDA website also, that there is a subsidy for 40%, up to 40% for the solar cold rooms. So that aspect is there. So we, in general, if you want to know that, are people aware on it? Do people reach out to you for solar cold rooms or a small decentralized cold room, energy efficient cold room? Or there are mainly people who are looking for a large capacity cold room or pack देखिए, house? अब मैं यूजुअली यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई यूपी में है, सपोज इफ द पर्सन इज इन यूपी, बिलोंग्स टू यूपी, आई वुड सजेस्ट यू देम टू विजिट द डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस. उनके पास 5 लाख 7 लाख रुपए तक की भी सब्सिडीज के मतलब कोल्ड रूम के लिए सब्सिडीज हैं. Okay. So they can visit over there and they can opt for that schemes. They can avail that schemes and get benefited. तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अगर छोटी स्कीम्स के लिए अगर कोई 5 लाख 7 लाख रुपए की है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी नंबर्स भी होते हैं, उनके पास खुद का भी एक टारगेट होता है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा उनके लिए एज कम्पेयर टू ऑप्टिंग फॉर एपिडाज फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, क्योंकि एपिडा के फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स थोड़ी बड़े मतलब यूनिट्स के लिए यूजुअली होते हैं. Understood, Mr. Shivam. Thank you. So one last question that Mr. Sagar has raised, that is there any subsidy available for ripening chamber with APEDA? Ripening chamber, hopefully, yes, there is a subsidy. So can you share? We will give you the crisp information on that, है ना. मैं आपको खुद से वो खुद से शेयर कर दूंगा on mail. ठीक है. Okay. So maybe most probably will Mr. Sagar will try to respond over mail about the guidelines and मैं आपको subsidy. chat में भी we will also share you the link of our financial assistance scheme in the chat. ठीक है. किसी को चाहिए होगा तो that can precisely go over there and have a look. Perfect. That sounds great, Mr. Shivam. So thank you for sharing the process, that how if any FPC, because FPC is our main target audience and farmer producer company or cooperative like VegFed, Mr. Ramesh Shukla has highlighted. So we do want them to know what is the process if you want to go for export. So that is the thing. Now I would request Mr. Anand to discuss on kind of importance of cold chain, that how it adds value if somebody or any FPC entrepreneur wants to go for export, agri-export. So over to you, Mr. Anand, if you can share some insights on that about the cold chain importance, and if energy efficient cold chain is there which can add value, or if you have any success story on it, please do let us know, because audience is very much interested to know about those success stories. You can continue with your program. For discussion on cold chain, CB Singh sir will come and he will discuss. Okay. You can continue with your program. ठीक है? Okay. So fine. So will there be any other person? Financial assistance scheme. The link of financial assistance scheme of APEDA is shared on the chat, so everybody can go through it. ठीक है? Okay. So now should I invite another speaker, Mr. Shivam, or can we expect Mr. Anand also to share some details on it? Or we'll wait for Mr. CB Singh? CB Singh सर आके कोल्ड चेन के ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे. And like how much time still is left for CB Singh sir to join? 15 to 20 minutes. He is on the way actually.
Mr. Shubham, are you there or have you left? Or Mr. Anand? Yes, I'm there, please. Okay, so just a small question between our next presenters join. There's one small question from Mr. Vanshaj Kaul, that are there any plan to develop export hub in PPP model or by credit financing for private entrepreneurs on the Kundli market and Delhi Mumbai expressways? So mainly they want to know about that. Is there any plan to develop any kind of PPP model or credit financing for private entrepreneurs? As far as I know, I don't think so there is any plan in near future. But for more information, CB Singh sir is just, he'll be in between us in next 5 minutes. He will let you know. You can raise this question again. Okay. So sir will assist you in this in the best possible manner. Okay. Sure. Yeah. Fine. So I think in the meantime, when Dr. CB Singh joins, I would request Dr. Pooja from Department of Horticulture, Bhopal, Madhya Pradesh, to continue with her kind of insights on different government schemes and horticulture schemes and various kind of ground level exposure where there are challenges that why farmer producer company or farmers are not able to kind of develop a cold chain infrastructure, and what are the bottlenecks for department as well to facilitate those kind of infrastructure. So so just give me a second, let me check that Dr. Pooja has joined, and then we will include her in this discussion. Thank you. Wait for 1 or 2 minutes, she'll be joining shortly.
So good afternoon, good morning all, and apologies for the glitch. So we have Dr. Pooja with us from Department of Horticulture, and she's from Bhopal, Madhya Pradesh. Okay, so Dr. CB Singh also has joined APEDA team. So Dr. Pooja, can we wait for 15 minutes? Can Dr. CB Singh finish his session, then you can join? Is it okay? Sure, sure. Thank you so much. Thank you so much, Please, Dr. please. Pooja. Pooja, we may continue. No issue. Okay, no problem, sir. Pooja, Sir, I haven't started. I haven't started as yet. So you can start. I'll join after 15 minutes. No issues. Okay, fine. So I think, sir, because Dr. Pooja can start in 15-minute, APEDA session was going on, and we will be really grateful if you can share insights on the importance of cold chain, and especially the energy efficient cold chain to strengthen agri-export. So that would be great for this webinar and for the audience. Okay. So actually, first of all, I sincerely thanks to the organizer, especially the kind of issues and challenges. Obviously, that is the one of the important point. I hope we may going to discuss. And but may I know who will be your panelist and what kind of participant from your side. So accordingly, we can make a give a input from APEDA. So that will be great. So because I have joined late, so my request to if you can brief a little bit. Sure, sir. So a small brief to you and even to the audience as well, we'll say that AEEE Alliance for Energy Efficient Economy does work on different energy efficiency based projects in India. And under that, under our organization AEEE, we have one wing which is on cold chain. So we do multiple projects to demonstrate energy efficient appliances, cold chain appliances, which can add value to farmer and which can reduce post-harvest loss in agriculture. And with that, we have organized a series of webinars. We had two webinars earlier. One was on post-harvest management importance, which was kind of participated by Dr. Swati Sharma from IIBR, Varanasi. And we had experts from various cold chain manufacturers, service providers like Ecozen, New Leaf Dynamics and all. So that was the first webinar. Second webinar was on financing cold chain because there are a lot of government schemes and subsidies to support cold chain, but people have a very limited information on it. So that was the second webinar. Now in that series, we have third webinar where people are very much interested in agri-export, and cold chain does play a very crucial role in that, whether it's pre-cooling of agri-produce or ripening of agri-produce or cooling of agri-produce or running it through on an entire cold chain, like through reefer vans, through cold rooms, or through different other aspects of cold chain. So that is how we were very much interested to have insights from APEDA team. Before you joined, Mr. Shubham Rai and Mr. Anand shared some insights on that. If any FPC is interested in kind of doing an export, so how they can enroll in it, what is the process, what is the subsidy with APEDA, and there were some questions from the audience where they wanted to understand about it. So those were some discussion points in this webinar. And other than that, we mainly expect that if you can share some good success stories where APEDA has done a deployment in cold chain and it has added value to them, whether it is in UP or any other place in India, any success story, and how it is important for any individual to or any FPC to have the cold storages so that they can improve their business operations and increase their business margin. So over to you, sir. That was. थैंक यू. आई होप आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है. जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम में बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया पार्ट के लोग ज़्यादा होंगे. नॉर्दर्न इंडिया पार्ट इन द सेंस फ्रॉम दैट अपर इंडिया, यू नो. तो मुझे लगता है कि व्हाट अबाउट द बॉटलनेक एंड चैलेंजेस फर्स्ट यू कैन डिस्कस. आप सभी जानते हैं व्हाट अबाउट द मेजर चैलेंजेस, नॉट ओनली द एक्सपोर्ट. It is the basic challenges in our domestic market about that cold chain supply.
और ये एक ऐसा बॉटलनेक चैलेंजेज है, स्पेशली दैट लैंडलॉक्ड स्टेट, व्हाट अबाउट द नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट, और वी कैन से द एनी हिली स्टेट्स व्हिच इज क्लोजली लॉक्ड विद दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस. सो मुझे लगता है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस कर सकते हैं. एंड जैसा आपने पूछा कि सर एनी सक्सेस स्टोरी और एनी गुड मॉडल if you have. For kind information, I hope that my listeners and my participants, they are well aware about the Uttar Pradesh. And what about the Uttar Pradesh and that state like Uttarakhand, Bihar, and another state from the northern India? सबसे बड़ा जो बॉटलनेक चैलेंजेस जो रहा है वो रहा है हमारा कोल्ड चेन का ही. उसमें जो हमारे पास नहीं था, बिकॉज यू नो वी हैव अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ दैट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक फ्रेश वेजीज, fruits, as well as the cereal sector also. But if you can look after that fresh foods and vegetables, हम सभी जानते हैं approximate 33% share the entire cultivation of that veggies we have covered from by the northern Indian states like Bengal, Bihar, Odisha, like UP, Punjab, Uttarakhand. But what about the market share? If you can see the market share, इनका कितना बड़ा market share है? And what about the losses due to lack of the kind of infrastructure the faced by our growers as well as that our mandi etc. तो ये देखें कि और यही रीजन रहा, दैट इज द मेजर रीजन कि जो नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट हैं हमारे यूपी में, अगर हम बात करें यूपी में, तो आज की डेट में हम कितना कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो. बट यस, that APEDA initiated that our activity in COVID period in 2020, and for just a kind information, within the 2 year, we have achieved the maximum export from that Varanasi region. You can say the Purvanchal. They are very close with our western part of the Bihar, also district Bihar, and some part of that our western UP, central UP, and Uttarakhand. You can surprise what about the growth ratio. Now we are approx 250% growth every year we have in our export from the airport only. I'm not going to discuss about the ICD as well as the inland transfer like Nepal and other country. But what about the export by air? Our growth rate is approximate 250% per year. And that is a major important role about the infrastructure. और ये इसलिए जरूरी है कि जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, you can't get the good success story. Or that is the one of the important reason we have connect to that FPO to the international market to facilitate the infrastructure at the airport, to facilitate the infrastructure at the farm gate level, to facilitate the infrastructure at the any exit point. और आज हम कह सकते हैं कि जो इस रीजन से अगर हम केवल और केवल पूर्वांचल का ही जस्ट सक्सेस स्टोरी यू कैन से वेर इन वेल कनेक्टेड बाय थ्रू द एफपीओज, जहां पे एफपीओ पूरी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है. दैट इज वी हैव एन अमूल मॉडल इन वेजीज सेक्टर. आई होप इट विल बी फर्स्ट एंड एवर इन इंडिया जहां पे हमने अमूल मॉडल को वेजीज में इम्प्लाई किया है. तो आप इसको देखें कि किस तरह से किसान का जो पैदावार है थ्रू द ग्रुप ऑफ द फार्मर्स रीच टू द इंटरनेशनल मार्केट by the FPOs directly, and what about their profit reach out again back to the farmers. So what about the success story in Amul, that we have compliance at there, but अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, मुझे अभी भी उस पर मैं हम काम कर रहे हैं और हमें अभी भी आवश्यकता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की. वी हैव क्रिएटेड स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट वाराणसी with the all infrastructure facility kind of pre-cooling, cold room, ripening, vapor heat treatment, hot water dip treatment, as well as the all facilities which is required for the international export. हम ऐसा कह सकते हैं कि now that वाराणसी और यूपी के बहुत ऐसे स्टेशन पे जहाँ की हम बात करें अमरोहा, हम बात करें लखनऊ, as well as that now we have facilitating the गोरखपुर also, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये यहीं पे कंप्लीट है तो नहीं. We need the more infrastructure so that we can reach out the maximum level to our farmers.
अगर आप देखें कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी पोटेंशियल, you can surprise approximate 1000 metric ton of the wages जो लास्ट 3 मंथ में गए हैं, यू कैन से फ्रॉम अप्रैल मई जून टू द मुंबई approximate 1000 metric ton wages sent to the Mumbai from the only Purvanchal region of the Uttar Pradesh and some part of the western UP. So that we have a potential, means state have a potential, but अभी भी हमारे पास कोल्ड चेन की challenges है. And cold chain means not only the infrastructure like pack house or any cold storage, we need the also reefer band that will be well connected to the entire supply chain. So जो gap है, हमें लगता है कि as an organization like you, I don't know how much you have studied on the entire supply chain in particular area. You have a good job in Bihar also. I have heard about that your activity. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें हम आगे बहुत सारा स्कोप है. और एक जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मेरे साथियों ने आपको बताया होगा, अबाउट द पॉलिसी, अबाउट द स्कीम, I can most welcome to that our entire service sector, especially they are looking after our industry in cold chain. हम उनके साथ मीटिंग भी करना चाहेंगे कि किस तरह से हम उनको, वो किस तरह से हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं. और एज एन स्टेट ऑफ यूपी, they have keen interested to setting the kind of infrastructure in pan UP. Also Bihar have come forward. They have a keen interest to set up the facility at Bhagalpur. APEDA have already sanctioned the project at Darbhanga. They have also going to Mithapur, Beta. They have also working with that Purnia, Katiyar. That also working in Buxar and as well as that Sasaram in Bihar. So these are the area working in Bihar. Also that UP, हमने आपसे बोला गोरखपुर, we are also working for the Mirzapur, Prayagraj, Jhansi, that we have also working with the Bijnor, as well as that Pilibhit. आप देखें कि Amroha which has already set up, and Agra we are also looking for the potato. I don't know how much you are aware about that cold chain challenges in potato. I was sub 3 years in Mumbai, and when I was in Mumbai, that I have visited several times Gujarat, because Gujarat मेरे पास था, and one of the model facility about concerned with that potato. और आप देखें कि वो पोटैटो की जो कोल्ड रूम है वो किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंटायर सब जो रिक्वायरमेंट थी वहां पे सिंगल विंडो सिस्टम अप्रोच, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आप देखें कि पोटैटो में हमारे पास, होपफुली पंजाब में मे बी पॉसिबल, बट यूपी में नहीं है, हमारे पास बिहार में नहीं है, जो कि सबसे बंगाल में नहीं है, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं. और कोल्ड चेन, पोटैटो में कोल्ड चेन एक हमारी सबसे बड़ी नीड है. आज भी आप देखें कि अप्रॉक्सीमेट 90% जो कोल्ड चेन है पोटैटो में, वो किस कैटेगरी के हैं, किस क्लास के हैं. अगर हम देखें कि वो किस तरह से उसकी सेल्फ लाइफ को मेंटेन करते हैं. अगर आप देखें अभी फर्स्ट एंड एवर गुयाना को पोटैटो का एक्सपोर्ट कराया गया एपीडा के माध्यम से, जो यूपी को भी लुक आफ्टर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम उनको नहीं कर पाए, हमें मध्य प्रदेश इंदौर से कराना पड़ा. रीजन बिहाइंड ओनली कि कुछ चैलेंजेज है. और आप समझ सकते हैं गुयाना अगर हम भेज रहे हैं, दैट नीड टू द 46 days फ्रॉम इंडिया टू द गुयाना बाई सी रूट. तो ऐसे में हमें किस चीज के सपोर्ट चाहिए. जिस कोल्ड चेन की आप बात कर रहे हैं, वी हैव अ बिग स्कोप इन बनाना, यू हैव अ बिग स्कोप इन वेजेज, यू हैव अ बिग स्कोप इन मैंगो एंड अदर फूड्स. व्हाट अबाउट व्हाई दैट, आप देखें कि आप जो बनाना है पूरे वर्ल्ड में किसका मूव कर रहा है. अगर पूरे वर्ल्ड में पाइनएप्पल किसका मूव कर रहा है, व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई नॉट इंडियन प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट. तो ये चीज सोचने वाली भी चीज है. मुझे लगता है कि दो बड़े बॉटलनेक है. पहला बॉटलनेक है कि जिस तरह से बनाना में या पाइनएप्पल में या दूसरे सेक्टर में, चाहे वो फिलीपींस हो चाहे कोई भी कंट्री, वहां पे जो बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मैं चाहूंगा कि आप लोगों को उनको बोर्ड करना चाहिए. एंड यस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड वर्क विद देम. अगर वो आगे आते हैं तो हम लोग को भी खुशी होगी. तो ये चीज देखना होगा कि किस तरह के चैलेंजेज है. अभी आप देखें कि पोटैटो हमारा, हम वर्ल्ड के एक लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसर्स हैं, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कितना है, ओनली 5 lakhs metric ton, only 5 lakhs metric ton, near to. And what about the 5 lakh metric ton?
4 लाख मीट्रिक टन वी आर एक्सपोर्टिंग टू द नेपाल, जो कि ओपन ट्रक से जाता है, डोंट नीड टू दैट इन कोल्ड चेन सिस्टम। तो आपका 1 लाख टन जो आपके अदर कंट्रियों में जा रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्री में जा रहे हो, चाहे फार ईस्ट एशिया में जा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट द पोटैटो टू द लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट। सेम यू हैव अ challenges in banana. We doesn't have a proper protocol, or we can say that cold chain, supply chain to the European market. You have success to the Gulf country only. What about the banana? आज हम बनाना मैक्सिमम हमारी रीच आउट है ईरान को. You have reached out till to the Iran, but you are not good success story you have in a European market. You don't have a kind of infrastructure to send to the long distance market. Same, we have a good green chili, but you have a success story till to the Gulf country. We need to the reach out to the European market. So यहाँ पे ये पॉइंट मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पे काम कर रहे हो और आप इतना अच्छा वेबिनार कर रहे हो, मैं लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग कौन कौन है जो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, और जिस तरह से आप इसको लेके जा रहे हो, मुझे उम्मीद है कि इस पे काम करने की जरूरत है और आप काम करेंगे। और ये इसलिए जरूरी है कि ये इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन की तरफ सोच रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है गोइंग टू टारगेट $1 ट्रिलियन। और क्यों? क्योंकि एक जब ये हम ट्रिलियन की बात करते हैं और ट्रिलियन डॉलर्स की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से हमारी फॉरेन जो करेंसी है उसके लिए भी बात करते हैं, और निश्चित तौर से जब फॉरेन करेंसी की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट की बात आएगी, और उसमें एग्री एक्सपोर्ट हमारा सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है। आज भी हमारे पास मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बहुत ऐसे सेगमेंट है जिसको कि हम नहीं दे पा रहे हैं। आज यूपी में नहीं, पूरे सप्लाई चेन में देखें, व्हाट अबाउट द बिहार, यूपी, एंड कहां पे आपके पास रीफर कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी है, रीफर कंटेनर्स की। आज हमने लास्ट वीक ऑफ जून में हमने ग्रीन चिली दुबई को 2 बड़े कंटेनर्स 40 फीट कंटेनर्स को हमने यहां से बनारस से दुबई को भेजा। इट वाज फ्लैग्ड अप बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूपी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और वो शिपमेंट हमें वो कंटेनर्स दिल्ली बॉम्बे से मंगाने पड़े। आप जरा सोचो, अगर कंटेनर बॉम्बे से आएंगे और फिर बॉम्बे को जाएंगे, व्हाट अबाउट द कॉस्ट। तो ये जो लॉजिस्टिक में काम करने वाले लोग हैं, जो कि आपको रिफर में काम करते हैं, इनका भी बोर्ड होना उतना ही जरूरी है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, ये पूरी सप्लाई चेन है, एक्चुअली दैट इज द सप्लाई चेन। ये कड़ी है, दैट इज द काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि माला है, और इसको आपको हम एक दूसरे को जोड़ना है। आई होप दैट इज अ गुड इनिशिएटिव जो आप कर रहे हो, और मैं चाहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी लिमिटेशन होती है, गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेज होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर इस तरह से आ सकते हैं, आएंगे, तभी जाकर के काम होगा। हम आपको एक कह सकते हैं, वी हैव एन गुड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आज की सबसे बड़ी नीड है पूरी सप्लाई चेन में। अगर हम कोल्ड चेन की बात करते हैं तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी बात करेंगे, क्योंकि जहां क्वांटिटी होगी, जहां क्वालिटी होगी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहीं हम कोल्ड चेन की भी बात करेंगे। यानी पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के बारे में बात होगी, तब जाकर के आप किसी सक्सेस स्टोरी को और अच्छे से बना सकते हो। अब सोचो जरा कि कैसे एक बनारस जैसा शहर, पूर्वांचल जैसा एक, सबसे हम लोग पहले कभी सुना करते थे कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, ये धार्मिक शहर है, यहाँ पे माँ गंगा बहती हैं, काशी विश्वनाथ जी हैं, लोग टूरिज्म पॉइंट से आते थे। बट आप आज गूगल का एक पेज खोलेंगे, जस्ट पुट ऑन देम एग्री एक्सपोर्ट फ्रॉम वाराणसी, आपको सैकड़ों पेज खुलेंगे, मीडिया से लेकर के हर तरह से। तो ये क्यों ऐसा हुआ? निश्चित तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया गया, एपिडा के एफर्ट्स को हर किसी ने रिकॉग्नाइज किया। आज हम ऐसे प्रोडक्ट को टच कर चुके हैं, कम से कम 20 ऐसे प्रोडक्ट विगत 2 सालों में जो इंटरनेशनल मार्केट को रीच आउट किए हैं। और ये केवल गल्फ ही नहीं, गल्फ हो, फार ईस्ट एशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, आफ्टर द ब्रेक्जिट, उसको भी हमने रीच आउट किया है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या ये हमारी सफलता है, निश्चित तौर से सफलता है, सरकार की सफलता है, हमारे सारे की स्टेक होल्डर की सफलता है, एक्सपोर्टर की। लेकिन जो क्वांटिटी है, जो मार्केट की डिमांड है, उस मार्केट के डिमांड को जो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को भेजना, जिससे कि जो हम टारगेट कर सकते हैं, उसमें कोल्ड चेन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है।
एज ए लैंडलॉक्ड एरिया अगर हम देखें कि क्या चैलेंजेज है, आप सरप्राइज कर जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया आपसे कि आई हैव सर्व्ड इन मुंबई, आवर रीजनल ऑफिस मुंबई, आई हैव हेडेड आवर रीजनल ऑफिस मुंबई फ्रॉम दैट गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो वहां पे देखिए कि व्हाट अबाउट, अगर एग्जांपल कहें कि अगर ग्रीन चिली आपके पालघर की है, अगर आप आम लेकर के नासिक से निकलते हो, अंगूर लेकर के नासिक से निकलते हो जेएनपीटी को, तो अंगूर का कंटेनर जेएनपीटी को केवल 50,000, 40 से 50,000 में पहुंच जाता है। लेकिन अगर यही ग्रीन चिली आप बनारस से लेके जाते हो, आम लखनऊ से लेके जाते हो, दैट इज कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 लाख रुपए रीफर कंटेनर का, जो इसके बारे में आपसे पहले बता रहा था। क्यों है? रीजन है क्योंकि आप समुद्र से दूर बैठे हैं, लैंडलॉक्ड एरिया में है, जेएनपीटी आपसे काफी दूर है, अप्रोक्सीमेट 2000 किलोमीटर, और वहां पे वो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे की काम करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि जो लोग लॉजिस्टिक के प्लेयर हैं, जो कोल्ड चेन में काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक के लोग, मैं उनसे भी आपसे उम्मीद करूंगा कि उनको भी आप बोर्ड करो, हम लोग उनसे भी चर्चा करें कि उनसे क्या मदद मिल सकती है। जो दूसरे जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की बात करते हैं, उनसे भी मदद की जरूरत है। वो किस लेवल पे लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ताकि हम मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर को जा सकें, चाहे वो कलेक्शन सेंटर हो, चाहे वो प्री कूलिंग और राइपनिंग चेंबर हो। आज आपको विश्वास होगा मूवेबल और सोलर बेस्ड प्री कूलिंग सिस्टम आज आपके यूपी में है। रामपुर में एक एफपीओ के माध्यम से वो बन रहा है, and they have created the good kind of pre-cooling and cold chain with the capacity of 5 metric ton which is movable, और वो पूरा सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों बेस पे है। उसी तरह से आप देखो कि इंडिया में फर्स्ट एंड एवर वेपर हीट ट्रीटमेंट अगर जापान के बाद बना तो इंडिया में बना, और वो भी जापान इंडिया में लखनऊ में बनना शुरू हुआ। सो दैट वी हैव कंप्लीट टू द जापान मार्केट। हमें जापान से बीएसटी की जरूरत अब नहीं पड़ती। वी हैव एन ओन डेवलपमेंट, यू हैव ओन डिजाइन एंड काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया आल्सो। तो ये चीजें हैं। ऐसे ही स्टार्टअप की, ऐसे ही इंडस्ट्री के लोगों की, स्टेक होल्डर की हमें जरूरत है, जो कि अपनी नई चीजों को लेकर के आए। और जो चैलेंजेज है, जो मैं इस बात को बोल रहा हूं, नॉर्थ इंडिया में जो पोटेंशियल है वे हेलो, Dr. CB Singh, can you hear us? I think we lost you. We cannot hear you, sir. Can you hear us, sir? Okay, so I think there is some technical issue at Dr. CB Singh's end. So we probably will wait. Yeah. We probably will wait so that he can join again. And it was really a very informative kind of discussion from his end, very enthusiastic and very energetic. And just to summarize few points from his end, I think as he highlighted that 5 lakh metric ton of potato we are exporting, India is exporting. Just a second, I'm receiving a call from him. Just a second. Hello. सर आपके माइक के पास एक बार स्विच ऑन करके देखिएगा। हाँ, आवाज आ रही है आपको? यस सर, वी कैन हियर यू सर। या चलिए ठीक। सॉरी सर, या प्लीज कंटिन्यू सर, यू वर सेइंग समथिंग एंड देयर वाज सम नेटवर्क इशू। मैं अपनी बात लगभग फिनिश कर चुका था। मैं ही कह रहा हूँ कि अगर जो भी आपके इस तरह के स्टेक होल्डर हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, स्टार्टअप हैं, मैं उनका वेलकम भी करना चाहूँगा। इफ दे कैन कम फॉरवर्ड विद द गुड सोल्यूशन
इफ दे कैन कम फॉरवर्ड टू कि क्या उनके एडवाइस सबमिशंस हैं, वो हमसे क्या उनका उम्मीद हमसे क्या करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट APEDA, और सो दैट वी कैन डू समथिंग फॉर द आवर फार्मर्स, आवर एक्सपोर्टर्स, एंड ऑब्वियसली जो मेन टारगेट है टू अचीव द मैक्सिमम एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। तो उसमें और मैं चाहूँगा कि आप इसमें, मैंने आपसे एक बात कही थी, शायद आपको नोट किया होगा नहीं, कि जो लॉजिस्टिक्स के जो बड़े प्लेयर हैं, लॉजिस्टिक के जो बड़े प्लेयर हैं, मैं चाहूँगा कि उनको आप बोर्ड करो, ताकि उनसे हम बात कर सके, हम लोग बात कर सके कि उनको क्या चैलेंजेज उनको है, क्यों नहीं यहाँ पे काम करते हैं वो लोग, और वो वाई दे हैव फोकस्ड ओनली दैट महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे कंफर्ट लेवल है उनका, इन कंफर्ट लेवल में काम करने के लिए कौन लोग आगे आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि यस, एज एन गवर्नमेंट हमने इन कंफर्ट जोन में काम किया है, लैंडलॉक्ड एरिया में, और एक बड़े लेवल पे काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लोगों का भी वेलकम करना चाहूंगा, वो लोग आए, और रियली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, दैट एरिया विल बी फ्यूचर फॉर द एग्री एक्सपोर्ट। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ह्यूज कल्टीवेशन है। इफ यू आर गोइंग टू कंपेरिजन अबाउट द गुजरात एज वेल एज दैट महाराष्ट्र एंड ऐसे कोस्टल स्टेट, शायद उनको हम सारा मिला दें तो इकलौता एरिया यहाँ पे एक छोटा सा एरिया निकलता है, एक छोटा सा एरिया जो पूरे एरिया के उस एरिया को कवर करता है। मतलब हम किसी को कम और ज्यादा की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल है, और ऐसे पोटेंशियल एरिया को अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करें तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए इंडस्ट्री है, उन लोगों को फायदा मिलेगा। और मैं इसलिए बात को बोल रहा हूं, हम सभी जानते हैं कि गंगा और जमुना के बीच का जो बेल्ट होता है, वो अपने आप में इंडिया का सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है। और आज जो चैलेंजेज है इंटरनेशनल लेवल पे, वो चैलेंजेज क्यों है? बस यू आर जस्ट फेसिंग द क्वालिटी, बिकॉज फार्मर्स यूजिंग द ह्यूज पेस्टिसाइड्स, ह्यूज फर्टिलाइजर। पैरेलली अगर आप देखें दूसरे जगहों से, तो इस एरिया में लोग पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम है। रीजन, क्योंकि नेचुरली चीजें यहाँ पे सॉइल में अवेलेबल है, वाटर का कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इसलिए एक बार उन सबके साथ साथ जो दूसरे स्टेट जो काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए जो उनके मॉडल हैं, अगर वो अच्छा कोई काम कर रहे हैं, उनको कैसे यहाँ रिप्लिकेट करें, और यहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं वहां पे कैसे जाएं, जिससे कि लॉजिस्टिक के साथ साथ जो कोल्ड चेन की चैलेंजेस हमारे सामने है, वो कैसे सॉर्ट आउट हो सके, और इसका आगे कोई बड़ा सोल्यूशन अगर हम लोग निकाल सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू आवर फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच for that time. Yes, I'm ready to hear to any kind of reply, if you can, anybody can ask the any question or anything. So first of all, sir, thank you so much for that energetic and enthusiastic discussion, sir. It was really insightful. And just to summarize few points and just to share that gist of the discussion, I believe that sir has highlighted that there's a huge potential for logistics segment which can be encouraged in this sector. Sir has also shared that we have a great share in export, but if we explore the major segment of export is in nearby or adjacent countries to India, there's a huge potential where you can export to European market or distance market, and where you need a cooling infrastructure to strengthen that supply chain. And definitely, if we talk about cold chain, we should not only restrict to cold storages or pack house. Reefer vans are also very much important, especially for states. We can talk about UP and Bihar, as sir said that it is a landlocked state, and we have to travel to either ocean if we have to logistically transfer our produce to different countries. So definitely that was some very much valuable insights. Sir also discussed about energy efficient thing, shared a good example of FPC from Rampur, which is utilizing this energy efficient pre-cooling chamber and a cold room so that they can encourage the export of vegetable. And one more important thing is, which sir has shared, that it is not only about potato which requires cold solution. Now it is high time we realize that even other green vegetables, other horticulture produce also need a cold chain solution. And if we have to achieve a big kind of target, which is a 5 trillion economy, agriculture is going to play a very important role, and it is going to play a very, especially from this northern part of India, which has huge potential to do that uh, kind of transaction with other parts of the world. So I am really thankful, sir, to you on behalf of AEEE. We would like to thank CB Singh sir
Shubham Rai ji and Mr. Anand Jha for their valuable time and insights. It is a request if I can open the floor for discussion. So for 5-10 minutes, people have some query and they want to discuss with you. Just to highlight, we have Mr. Pranav Malik. He is from a logistics sector. So if I can unmute Mr. Pranav, if Mr. Pranav, can you raise your hand so that I can unmute you and you can share something about your organization? If you can raise your hand, I can see you. It will be easier for me to point out. Okay, there was some. So I'll unmute Mr. Karbhari Munde. They are from a cooling service manufacturer organization. So Mr. Karbhari, you can unmute yourself. You have the access. Yeah, please go Yes. ahead with the question. Yeah. Am I audible? We can hear you, Mr. Yeah. Yeah. Thank you, AEEE, and thank you, CB Singh sir. It was a very crisp and very energetic talk from your side in the very morning today. वो जो enthusiasm था definitely rare रहता है सर. I'm from Ecozen Solutions. मैं product manager के तौर पे काम करता हूँ सर Ecozen में. And मैं बताना चाहूँगा कि सर Ecozen is into decentralized cold storages. And we provide cold storage from 2 metric ton to 30 metric ton capacity. और हम constantly customers के साथ engage रहते हैं and other stakeholders also. So you being one of the stakeholders, we would definitely love to hear from you because हम ये product improvement करते करते काफी कुछ ये product में development लाए हैं and हमें लग रहा है कि इसमें और भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स है. सो गोइंग फॉरवर्ड वी वुड बी एंगेजिंग विथ यू, बट some keynotes at this point in time, would you suggest which is essential from cold storage, decentralized cold storage point of view going forward? Thank you, Mr. Karbhari. CB Singh sir, you want to address this question? Sorry, what about the question from them? Karbhari ji, can you shortly highlight the question again? हाँ, तो सर अभी ये डिसेंट्रलाइज कोल्ड स्टोरेज के डोमेन में गोइंग फॉरवर्ड अगला कुछ समय में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स आने की आपको ये संभावना है या रादर आप एक्सपेक्ट करते हो? कोई सजेशन आई थिंक जो कारभारी जी जानना चाहते नहीं, थैंक यू. आई होप अगर आप नॉर्दर्न इंडिया को देखें, व्हाट अबाउट द चैलेंजेस, बेसिकली आई कैन से द चैलेंजेज. यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर. फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज कैन से दैट इज द कलेक्शन सेंटर. I don't know how much you are aware or we are aware, but as per my background, because I have a background in agriculture, so I did the doctorate in agriculture, so I am a little bit aware about the crop system and pattern. Veggies, veggies or any fruits, you can say the any fruits, but veggies have a shelf life only 4 hours. If you can pre-cool within the 4 hour, 5 hour, then you can send to that any cold chain system. तो ये आपको उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है. एंड अगर आप देखें, मैंने क्यों बोला फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर. फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि कलेक्शन सेंटर, इफ एनी हैव एन कलेक्शन सेंटर इन अ क्लस्टर लेवल, और उसके बाद अगर वो किसी कोल्ड चेन को कनेक्ट करता है, यानी किसी बिग पैक हाउस या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करता है. दैट हैव अ मॉडल इन वाराणसी, जो कि मॉडल हमने फर्स्ट एंड एवर वी हैव क्रिएटेड द मॉडल इन वाराणसी, कि कैसे पूरी सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करना है. सेम बिकॉज किसान ने अगर सब्जी को तोड़ा, वेजिस को तोड़ने के बाद अगर वो वहीं पे अगर उसकी प्री कूल कर देता है, मींस प्री कूल कर देता है, अगर अपने कलेक्शन सेंटर पे लाने के साथ साथ वो प्री कूल करता है, और उसको अगर वो रिफर वैन से कनेक्ट करके किसी भी बड़े सेंटर को ले जाता है जहां पे वो क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो दैट कैन बी पॉसिबल. लेकिन ये हमारे पास नहीं है. We have a cold chain, we have a pack houses in a different sector, different area, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस एरिया में है,
जहां पे कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल जाते जाते बहुत हद तक यू कैन से कि 20-25% सेल्फ लाइफ को खो चुके होते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि जब हम एक्सपोर्ट को प्लान करते हैं, यू कैन प्लान टू द एक्सपोर्ट थ्रू द रिफर कंटेनर, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू उसके सेल्फ लाइफ डिटेरिएशन की तरफ जा चुकी होती है। आप फिर उसके सेल्फ लाइफ को एक लेवल तक रोक सकते हो, आप उसको ठीक से नहीं रोक सकते। तो फार्म गेट पे आने वाला समय, जो मैं मानता भी हूं कि ये जो फार्म गेट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, ये आप हर कोई अब इसको रियलाइज कर रहा है। यदि हम बड़े स्केल की बात करें तो जैसे चाहे इक्वाडोर में बनाना का अप्रोच हो, फिलीपाइंस में आपका पाइनएप्पल का अप्रोच हो, ये दैट इज द सिस्टम। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रखा है कि उस सिस्टम के थ्रू उसको लेकर के जा रहे हैं। दैट इज द रीजन कि उनकी सेल्फ लाइफ, चाहे बनाना की सेल्फ लाइफ आज इक्वाडोर के पूरे पैन वर्ल्ड में है, फिलीपाइंस का पाइनएप्पल का सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड में है। हम इंडिया में अगर ग्रीन चिली, आप यू कैन सरप्राइज, इंडियन ग्रीन चिली पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे यूरोप का मार्केट हो चाहे गल्फ का मार्केट हो। आप, मैं सिंगल क्रॉप की बात कर रहा हूं। आज भी ग्रीन चिली पे काम करने वाले लॉजिस्टिक सिस्टम में बहुत कम लोग बैठे हैं। आज अगर देखें कि आप पंजाब को भी जानते होंगे किन्नू के बारे में, आप यूपी से बहुत सारे फ्रूट्स है उसके बारे में जानते होंगे, कितने लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इनको लेके जा पा रहे हैं, कितने दिन का सेल्फ लाइफ हम क्रिएट कर पा रहे हैं। हमारे पास क्या सेल्फ लाइफ है? बनाना मैक्सिमम 30 डेज 35 डेज, इसके बाद हम मैंगो में बनाना भी की कहानी हमारी भी वही है 40-45 दिन की। तो हम कितने दिनों की, अगर कोई चीज, मैं बार बार कर रहा हूं, ग्रीन चिली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग इन नॉर्दर्न इंडिया एज वेल द पैन इंडिया लेवल, लेकिन हम कितना लेके जा रहे हैं। उसी तरह जिंजर की बात करो, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जहां जिंजर का है, जिंजर का सेल्फ लाइफ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो मोल्ट आता है, हमारे पास आज भी जिंजर में मोल्ट की जो प्रॉब्लम है, जो कोल्ड चेन के थ्रू लेके जाते हैं कंटेनर को और दुबई में जाते हैं, उसके अंदर मोल्ट आता है। तो निश्चित तौर से या फार्म प्रैक्टिसेस के चैलेंजेस हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट के भी चैलेंजेस हैं। जो कोल्ड चेन केस को मेंटेन करने में जो ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, हमें एक ज्वाइंट एफर्ट चाहिए, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो कि उस क्रॉप को ट्रीटमेंट करके उस कोल्ड चेन को मेंटेन करने में सहूलियत दे, और जिससे क्रॉप, जिससे प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट को जा सके। आप सरप्राइज करोगे, आज डोमेस्टिक मार्केट में आज अदरक, जिंजर की मैं बात कर रहा हूं, क्या रेट चल रहा है, आज टोमेटो का क्या रेट चल रहा है, एंड व्हाट अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ इंटायर सप्लाई चेन as well as the tomato, or we can say the ginger. How many percentage have a damage just due to the logistic issues, cold chain issues? I can say that that is the challenge of the cold chain issues. Somewhere the cost of the tomato, that is approximate not more than 10 to 20 rupees, or somewhere is 200 rupees. The same is the ginger also. तो मुझे लगता है कि इसमें जो क्लस्टर लेवल पे कलेक्शन सेंटर का डेवलपमेंट है, क्लस्टर का आइडेंटिफिकेशन एंड दैट कलेक्शन सेंटर पे उनका डेवलपमेंट, और उस पूरे सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करते हुए आगे लेकर के कनेक्ट करना ही एक हमारी नीड है। हमने काम किए हैं, आपने भी काम किया है, हर किसी ने काम किया है, लेकिन एक हम अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहां की पूरी सप्लाई चेन को इंश्योर कर सकें कि यहाँ पे जो डैमेज है वो नॉट मोर देन 10%। पूरी सप्लाई चेन में यदि डैमेज 10% तक आ जाएगा, उस दिन कोल्ड चेन की सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। और अभी भी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ ही प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ग्रेप हो जिसमें हम सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट भी वैसा है, ग्रेप एक प्रोडक्ट भी वैसा है जहां पे उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज करती है, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखता नहीं है कि जिसको कि हम रिफर कंटेनर से बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे प्लान कर सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोल्ड चेन जो टॉपिक है फॉर द एग्री एक्सपोर्ट या इन द एग्री एक्सपोर्ट, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं, जैसा कि आपने पूछा कि आपने बताया कि वी हैव वर्किंग इन अ गुड मैनर, आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अच्छा से काम कर रहा है, यू विल बी हैप्पी टू काइंड ऑफ योर सपोर्ट, एंड व्हाट अबाउट द सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड, विल बी कीन इंटरेस्टेड टू कम फॉरवर्ड एंड मीट टुगेदर, and accordingly we can plan कि हम लोग क्या कर सकते हैं। Thank you. Thank you, sir. Thank you for that kind of insight.
I think very briefly you have shared that there is a need for cold room at decentralized cold room at farm gate level, because again you need to aggregate it and then you need to send it to a collection center or distribution center. From there it can be sent for export or distance market. So very well taken, sir, your point. And just to add very shortly, sir, AEEE is also exploring turmeric based FPC in Northeast Meghalaya because that has very high curcumin content. And they also highlighted same thing, sir, that there is definitely a rotting issue in fresh turmeric. But even if you're drying it and you're storing a dry turmeric, so farmers, if you talk about awareness point of view, they say that it is very clean and we don't need a cold chain for a dry turmeric. But when their support agency is sending that sample to buyers in distance market, there are mold issue which you have highlighted just now. So the treatment, the process, that awareness, that also is a aid to supplement cold chain. Even cold chain alone cannot support that. And because we have done assessment last week only through field visit, if everything goes right, then AEEE probably will deploying a sustainable cooling solution in Meghalaya to support turmeric-based farmers there. So very shortly, we will try to conclude that discussion and process. मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा. व्हाट अबाउट द Yes, sir. इंडस्ट्री, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं फ्रॉम द गुड इंडस्ट्रीज, दे आर डूइंग द वेल जॉब. मैं रिक्वेस्ट टू देम कि वो उनको एक पायलट मॉडल लेकर के आना चाहिए. इफ यू हैव एन अ काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू हैव एन अ काइंड ऑफ डिजाइन और आइडिया, जैसे कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो मैं तो कहूंगा वो CSR के थ्रू जाए, या जैसे रीजन बिहाइंड. देखो सबसे बड़ा इशू क्या है, ऐसा नहीं कि मार्केट में कंपनियां नहीं है. आज अगर डेलमेंटो बड़े लेवल पे काम कर रही है, चाहे वो इक्वाडोर में काम कर रही है, चाहे फिलीपाइंस में, जहां भी जो भी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, किसी एक की बात की नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कुछ अपने तरफ से डिजाइन को ग्राउंड लेवल पे शोकेस किया है. और अगर आपने किया है तो मैं चाहूंगा कि उसका एक्सपोजर कराइए. यू कैन इनवाइट टू दैट पीपुल फ्रॉम दैट एरिया और उनको शोकेस करिए हाउ योर मॉडल इज वर्किंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म. अगर नहीं तो आप उनको छोटे स्केल पे ही थ्रू द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपुल उसको आप रीडिजाइन करिए उस सेक्टर में, उस जगह पे जहां पे कि क्लस्टर है, जहां पे कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं. दैट कैन, यू नो, आप सभी जानते हैं, बिकॉज हम द फार्मर फैमिली, और गांव में कहा जाता है कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप. मीन्स दैट फार्मर्स लर्न फ्रॉम द अनदर फार्मर्स. द फार्मर्स not more learn from the scientists as well like that us, but they more learn from their farmer family, farmer members. वो किसान की भाषा किसान को समझ में आती है, हमारी भाषा आपको कम समझ में आती है किसानों को. मीन्स कि उस प्रैक्टिस को यदि आपको जाना है, अगर आप चाहते हो कि इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हो, तो आपको उस ग्राउंड पे जाकर के एक मॉडल, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक शोकेस करना पड़ेगा, जिससे कि लोग, और दैट कैन बी पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रामपुर FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रामपुर. जस्ट टू सर्च आउट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रामपुर, चाहे रामपुर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस व्यक्ति ने प्री कूलिंग डेवलप किया, सोलर पैनल बेस, कोल्ड रूम डेवलप किया, सोलर पैनल बेस विद इलेक्ट्रिक आल्सो, और दे हैव एन मूविंग एनीवेयर, आप उसको कहीं लेके जा सकते हो. दे हैव अवार्डेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, जस्ट 4-5 months बैक, दे हैव अवार्डेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर देयर जॉब. और वो लड़के बड़े ही एक्टिव हैं, एंथुसियास्टिक हैं, तो लेकिन उन्होंने करके पहले दिखाया. और फार्म गेट पे दे हैव अ काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी इन अ कोल्ड चेन. दे हैव एन ओन डिजाइन एंड यू कांट इमेजिन अ सरप्राइज व्हाट अबाउट द कॉस्ट विद द ऑल, व्हाट इज ओनली 10 लाख रुपीस फॉर द 5 metric ton. और आज जो क्लस्टर में कलेक्शन सेंटर में अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, वहां से क्रॉप को उठाते हैं, प्रोडक्ट को उठाते हैं, और फिर आगे को वो मूव कराते हैं. तो ऐसे इनिशिएटिव यदि हैं और आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि उसे आप लोग लेकर के आओ. सो थैंक यू फॉर द इंटरवेंशन. Yes. Sir, one last thing, because we have presenter participant from this logistics segment. So Mr. Pranav, can you unmute yourself? You have the access to unmute yourself and talk. Thank you. Thanks a lot. Thank you, CB Singh sir. Very wonderful to have you on this forum, and I have been following you for a long. You have been a great support to the trade. Just to give a little background, I've worked on the trade side, on the perishable side of the trade also, and for past 20 years
with big corporates who have been into the perishable exports, growing and trading. And now I'm a part of a logistics company, and we have SME, the subject matter experts, sitting within the organization who are able to provide real-time solution, not only limited to the international logistics, but also on the packaging solution. So apart from the balance reefer or the non-traditional reefers which are running in the countries, we have a strategic tie-ups on the technology, on the passive side of the packaging also, and the cold chain management. We are more than willing to support to the trade the same solution which we have already offered to the top 10 exporters of perishable from India. As we speak now, we are carrying the major perishable export commodities from India, including baby corn, chilies, pineapples, onion, banana, and we have a pan-India presence. We have a global presence, and rest assured, we have a ground handling team who are expertise in handling the perishable export. Dr. CB Singh is an expert matter. We have taken his guidance, and he's a I would say a valuable expert sitting within the UP, more than supportive to the trade. I am very honored that we have worked and taken his input in improving the logistics requirement of the trade. Thank you so much. So nice, Mr. Pranav. We wanted to discuss about the success stories, and it's so good that we have participants also sharing success stories from CB Singh sir, and CB Singh sir sharing success stories from different companies and FPCs. So thank you for this platform and for the participation. It was really great. I will take one last question from Mr. Jyoti Prasad Bhattacharya. Then maybe we can request other participants to mail, because definitely we do not want to take much time of Dr. CB Singh. So I have unmuted you, Mr. Jyoti Prasad. Please quickly complete your question. Don't take much time. Yeah. We can hear you. Thanks for connecting. Actually, it's a nice presentation given on cold chain for agri-export. Came to know a lot many things. Now, my question is, because this is highly energy intensive, and right from collection to cold storage to finished product. So what is your energy benchmark? Because it is a highly energy intensive. So have you prepared any SOP for this, and what is the energy benchmark in each stage, in each cold storages? Okay, so if I understood correctly, you want to know about energy consumption for cold storage, that APEDA has set any guidelines for energy consumption and all. Do you want to ask that question, Mr. Jyoti Prasad? Yeah. Correct. It is that. No, I can say no. Region that we have in a separate organization in a government of India. I hope that organization can give the information, because you know हमारे पास जो अलग-अलग department हैं, they are looking after it. APEDA, basically, if you are aware, our mandate is totally different. So I can say that we have a department. If you require, we can connect with them. So there is no issue. But as an APEDA, हम लोग इस पे अभी काम नहीं करते. So thank you, Mr. Jyoti Prasad. And another point is that power outage. How you counter the power outage in your cold storages? Sorry, power failures in cold storages. How do you counter that? Yes, that is a good question. Basically, I can say that is a good question. Especially, you know, if you can looking after the pan India level, somewhere we have a good supply chain regarding, you know, if you have a good grid system, and if you can say that challenges as we have, where in a kind of you know disconnection or cut off time in UP like Bihar, but as so you have a supporting infrastructure like that DG set or jet set to that our facility, especially that export facility, and accordingly we have planned.
Thank you, sir, and thank you, Mr. Jyoti Prasad. So I think we have one last question from Dr. Satish, if I'm understanding correctly. So I've unmuted you, Dr. Sir Satish, sir. Can you ask your question, what you have mentioned in the chat box, so that there's no gap in communication? One last question, and then we will move to Dr. Yeah. Yeah, am I audible? Yes, yes, we can hear you, Mr. Satish. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Singh, for your time and sharing about APEDA schemes. So I have just one question, which is broad in terms of its scope. So I want to understand if APEDA has any kind of sustainability framework to promote ecologically and socially just production systems for export. I may not be directly related, but the larger point is, say, for example, in case of sugar, when we export sugar, I think as time goes by with water scarcity, it is not just 40-45 rupees a kg of a sugar exported, but 3,000 liters of water being exported. Similarly, I mean, we are working in Bihar, Gujarat, and Maharashtra with local communities and on the topics which you just mentioned, looking at the possibilities if clusters can be collected, something like a community cold chain can be designed. But looking at the various produce, say in case of Bihar, I mean, we see that the mainstream system is promoting G9 varieties of banana, whereas we find that Bihar is blessed with so many local varieties like Chinia, Mutwa, Batisa, which are locally priced. I mean, there is very strong economic demand for it. And it also makes ecological sense because we all know that G9 is highly prone worldwide. It is a monoculture. So I think this is one point which we are observing in multiple states. And there is a need to have a sort of a sustainability framework to promote production system as well as various schemes promoting infrastructure development or export. So I would really like to hear your thoughts on this topic. Thank you so much. And really, I can say that is a good question in a larger point of view, but it will really difficult to reply directly. That is a matter of interest. Number one, that is the matter of interest regarding that what you have mentioned, and that I have personally the same view in Bihar. Why the people doing the kind of crop, why the cultivating the kind of crop which is not favorable for the and which is not good for this climate. If you have already the kind of variety like banana, if you can mention the banana, if you have an Hajipur Chinia, if you have an Bhagalpur that variety, that very famous, you can say the same like Chinia. Why they are growing the G9? But my dear gentlemen, it is totally unofficially. वो बोलते हैं ना, वो जो मैंने पहले भी बोला, देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप, means that is the market demand basically. That is the market demand, and that is the reason जो मार्केट में चलता है ना, यंग जनरेशन अगर आप वो 3 पीस पहन के चलेगा तो 3 पीस पब्लिक देखना शुरू कर देती है. Otherwise, what about the quality in Chinia? It is excellent variety. I have also the fan of the Chinia banana, and further, that is the market issues. So that is I can't say too much, but as another challenges, we doesn't have a proper infrastructure for the Chinia banana. Further, we doesn't have a proper practices, farm practices to increase the shelf life. What we have in a G9, their appearance. What about the appearance in G9? Why it is not look like in our Chinia banana? Means the research is required our Chinia banana also.
they can compete to the G9. अगर आप देखो what about the nutrient in चिनिया banana is much better than the G9. It is a personal observation. It is my personal view. It is not the officially. लेकिन and further overall, yes, that is a matter of promotion. That is a matter of efforts to promote the kind of product to the domestic market in everywhere as well as international market. And the same, that is the matter of self-life. Because G9 पे सबने काम किया है. Everybody, हर किसी ने जिससे पूछो G9 पे काम किया है, that is the उसके टिश्यू कल्चर हर जगह घूम रहा है. और one of the region जो आपने बोला बहुत अच्छी बात बोली है, one of the region जो बनाना के डिजीजेज हैं, they have reached out everywhere in pan India. The same like potato, जो potato में Ralston have reached out everywhere. The same in banana, that banana canker, banana bunchy top have reached out everywhere through the just G9. If the variety have resistance against the disease, but now that same variety have sustained for the diseases. So yes, you are correctly right, but it is the personal view, that is the matter of interest, that is the matter of market. And यहाँ पे you can say that everywhere. Are you surprised why the people are going to grow that dragon fruits? Is it our crop? But market have a demand, public have a demand. That is the reason they are growing. So yeah, why the Thai guava is growing by the farmers? It is our crop. If you have an Surkha guava in Allahabadi Surkha guava, that is one of the popular variety in India. So that is a matter of demand. That is a matter of quality also. Maybe the pulp percentage is too much higher than that this varieties. So yes, what I have requested to all of you, it is the personal, now is the officially. It is request to all of you, your support, your intervention, the trade point of view intervention, as a stakeholder intervention is highly requested. And that is the reason state has come forward, government has come forward to need your support. Then will be achieved that our target the $5 trillion economy. $1 trillion economy which is set by the state government, like UP. Then you can be achieved. So that is the need of the requirement, that is the need of the food, and a lot of things. And one of the important, that is the reason hybrid variety entered in the market. And you can see that how many number of hybrid variety in the market and why the hybrid variety is more popular. Lot of the issue, lot of the point we can discuss, because it's not the small point, it's not the simple discuss, but yes, I totally agree with you. Your point is genuine and need to work out to promote the Chinia banana, kind of Chinia banana to the domestic as well as the international market. It will be great help to the growers, farmers, and also the highly nutrient food for not for the human being as well as the child to the anybody. So I really agreed with you and need to the work together with the state and central as well as like your state, your stakeholder like you. Thank you. Perfect. So thank you so much, sir. Thank you for your answer and for your clarification. It is, as sir said and as Mr. Satish highlighted, that it is all about branding and kind of promoting your product as Chinia variety. I also personally feel it is a very delicious variety of banana. I also have a personal like for it, but it is not branded as like G9 variety. So it is up to us how much we can encourage these kind of varieties. So thank you so much, sir, for all the covering all the aspect, whether it is kind of treatment of produce to strengthen cold chain or export, whether it is promotion or branding of a produce, or whether it is kind of adopting a good cultivation practice to encourage export. You have covered all the dimensions which our audience was expecting, and there was no stone unturned where we can feel that this point is missing from where we could have got some insights from APEDA. Lots of thanks to APEDA team, to you, sir, for your kind insights, for sharing your time.
I would request audience and I would like to apologize to them that we cannot take further questions because it would be not right to Dr. Pooja, who is waiting there for her turn to come up. So really sorry to the audience, and we will have half an hour more, and it is a request if CB Singh sir and other participants for APEDA can stay there, it would be good so that we can hear insights from Dr. Pooja. My team will be, but because I have another meeting, so my team will be here. No issue. No problem, sir. We truly appreciate your participation. Thank you so much. And we look forward to connect with APEDA for further guidance. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. So Dr. Pooja, I think you have the rights. Can you unmute yourself? Yeah. Really sorry for the delay because that was something very exceptional presentation and we did not want to interrupt him. We usually get very less time to get to hear from APEDA and all. So my apologies no to issues you. From my side. It was, a very valuable session from Dr. CB Singh. Yeah. And it has added to my knowledge furthermore. Thank you so much. So I request, can you switch on your camera so that audience can also see you? Just a second. So just to introduce, I have already highlighted, we have Dr. Pooja from Department of Horticulture, Bhopal, Madhya Pradesh. And thanks to her that on the very last moment, she agreed to participate as a guest speaker because due to some technical issue, we could not get speaker from Department of Horticulture, Lucknow, Uttar Pradesh. But very much thanks to Dr. Pooja, and over to you. Please share your valuable insights when it comes to grassroots level challenges for cold chain. What are the thoughts of farmer, why they are not going for cold chain infrastructure, or what challenges department face when they want to deploy but they don't get a kind of appropriate application or support from grassroots level farmer or FPC. Thank you so much. Over to you, ma'am. Yeah, I would like to just share my screen. Please, ma'am. Just a second. So I have stopped sharing now. You can see at the rightmost corner, there is a share option. Sorry. Yeah, I have clicked that. Yeah, then you can click on first option, screen, window or tab, share content. And then from that, you can share window or whole screen, whichever is comfortable. Yeah. Is my screen visible? Your screen is visible, ma'am. Yeah. Okay. So I think much time is not left. So I'll just quickly give an overview about our today's topic and what are its implications and bottlenecks and what are the solutions regarding cold chains for agri-export. So starting with a cold chain, like the speaker who was presenting in the first session, I missed what he delivered, but a quick overview about what is cold chain actually. Most of the people are from the same industry, so they must be knowing it, but some students who have joined and who don't have an idea or detailed idea, just in few minutes I'll just share what is a cold chain. A cold chain is a management of temperature for perishable products in order to maintain quality and safety from the point of origin through the distribution chain to the final consumer. In simple language, what a farmer produces in his field, it is transferred to the consumer at the market end. The time duration which is taken from the production to the transfer, we have to maintain the temperature of the perishable products to maintain its quality and safety. To maintain that quality and safety, we require a certain temperature for that, and that temperature is artificially created through cold chains. I think I'm clear in that. Moving further, why cold chain is important? See, maximum fruits and vegetables, they come under the category of perishable products. Perishable products means whose shelf life is not very much.
So we need to ensure that what is produced from the farm meets the consumer end in the stipulated time without deteriorating the quality of the fruits or vegetables. So for this reason, cold chain is important. And if we fail to keep the correct temperature, it can result in change in the quality of the fruits or vegetables, in its texture, discoloring, microbial growth, and many other things. So to avoid all these things, we uh, have the need of cold chain. Moreover, today the consumer is ready to pay a high price for quality of the products. So cold chain is also important in this uh, perspective. Now, moving forward, just a second. I'll just be quickly maneuvering the pages so that I can quickly finish off what I want to say in this stipulated time. Now, coming to the sustainable cold chains. Now, what has been the trend in India is we are all focusing over, we need cold chains, cold chains, cold chains, but we are not, giving importance to the energy emission aspects of cold chain, like the amount of carbon dioxide produced and the pollution created. So moving forward, we are looking for the sustainable cold chains. Why the cold chains are important? Because feeding the global population is important. That also includes the fact that we should avoid wastage. The lack of effective cold chain to maintain the quality and nutritional value of food is leading to the food loss and waste. And to reduce that, cold chain plays an important role. Now, the global food chain infrastructure has been growing rapidly in recent decades. However, the growth is uneven due to the problem like most of the developed countries are already working towards this, and this is a bit new concept in developing countries. Developing and emerging economies need substantial additional capacity at all stages of cold chain to ensure uninterrupted connectivity from farm to fork. This is an important aspect. Over the long term, achieving a sustainable food cold chain will require shifting the approach to cold chain development from linear to circular, recognizing the interconnected and the dynamic relationship and the feedback loop within the whole system. Nowadays, what is happening is that we are giving more importance to the individual cold chain. We are not giving importance to the integrated cold chain system where people can actually share the all these the things of cold chain, what are the processes involved. Like if you want to establish 10 different cold chain in a district, so you can have a probably integrated cold chain system where all the producers are connected and they can share the resources. That will be a great idea. Now, overall, the food cold chain is responsible of around 4% of total greenhouse gas emission. As I said, like the cold chain, now there's a trend of increasing cold chain development in developing countries, but the amount of greenhouse emission is around 4%. So solution is to be needed for this. Now, solution is needed to reduce the emissions from the global food chain and to make this infrastructure more environmentally sustainable. So we are working on that, and many countries have already passed some policies and acts, and India also some policies have been made, and it is in pipeline that we will be enacting over the sustainable cold chain. Now coming to the food cold chains, a global perspective, what we can do here is this, what is the key role of the cold chain? Now, a food value chain, when we talk about the food value chain, it has two ends, like the producer end and the consumer end. Now, when the interlinking is done between these two ends, what all processes is coming, it adds to the sustainable food chain process. Okay. So now various processes are included, like to add value to the products. Okay. Now in that many processes are included. I'll not go into the detail, but I'll just share some processes which comes under these value added processes. Like first is the primary processing, which includes at the farm level, that is sorting and grading and packaging. Okay. After that comes the secondary process, which includes the pre-cooling and storing, and then comes the food processing and transport. So all these processes have to be kept in mind while thinking over cold chain aspect.
I'll just like to read out this, you must be seeing on the screen, a generic food value chain. Like at the farm level, when the production is done, the farmer has to aggregate and store that product. For that, proper facilities is not available at the grassroots levels. Okay. After that, what can he do is, at that time when he has low storage capacity, he has to forcefully sell his product. Or the second option which he has is that he can go for processing. Okay, the processing of products. Processing includes like the perishable products can be converted into value-added products after processing. For example, tomatoes. Tomatoes can be converted into tomato sauce, tomato ketchup, dry tomato powder, all sorts of things like that. Then comes the marketing and distribution. Now, marketing and distribution also is an important aspect because the grassroots level farmer fails at that. The marketing and distribution. He is only limited to the local markets. And finally is the consumption. It's like all these processes are involved between the production and the consumption process. Now, the typical, I'll just try to explain through, not through the paragraph, but through some images that can be more clear and I think interesting to the participants also. Typical food logistic cold chain steps and stakeholders. Now, when a farmer produces his product, when he harvests, he has 2-3 options through which he can sell his product or market his product. First is either harvest and directly supply to the local market, and then he can go for the domestic refrigeration and finally to the consumptions. The second option which he has is he can primarily process the product and packaging is done. With the packaging is done, pre-cooling is done, and then comes for the bulk cold storage. Bulk cold storage is then transferred to the distribution center, and from distribution center either it can go to the catering outlets or the retail outlets. From retail outlets, there is further option that either they can go for domestic refrigeration and finally to the consumption. Okay. Now the third option which he has is that after harvesting he can go for processing. Like I said, if he doesn't have the capacity of cold chain or something like that which needs heavy and hefty amount of investment, he can go for the processing aspect. Like for example, what I said about the tomato, or manufacturing for the value added products. Then after the processing of the products, the finished products can be either transported to the ports or for the cold storage, and then probably they can either go for the export, and the wholesalers and exporters they can readily connect with them, and they can also import the products from the farmer. So this way he can get more value for his products. Now, there is too much of discussion about that pre-cooling and cold storage. What is pre-cooling? What is cold storage? People, especially farmers, are confused about that. Pre-cooling is a primary chilling. We can call it one and the same thing. Is a controlled rapid removal of heat from the freshly harvested product. As soon as the farmer harvests the products from the field, the rapid removal of the heat, because there is some heat generated by the physiological processes which goes on in the fruits and vegetables, so that has to be decreased, and pre-cooling and primary chilling helps in that. Okay, it requires high capacity refrigeration and optimized operation to minimize the weight loss from the product. Now, pre-cooling is an essential first step in fresh food cold chain. It is one of the effective methods to maximize the shelf life of fresh produce, especially maintaining the nutritional quality. Okay. Now, pre-cooling is often overlooked in the developing world with a focus on cold storage. Cold storage is a refrigerated warehouse. Okay. So the basic difference between both the things is that pre-cooling is you are directly applying that process on your harvested product to remove the heat from that product. Whereas cold storage is a refrigerated warehouse. Farmers nowadays, there is more concept of farmers building out warehouses for storage of wheat, rice, all these things. No? So they can understand that this is a refrigerated warehouse. The cold storage can be considered because the word cold is included. So it is a refrigerated warehouse with suitably sized chamber capacities for storage of pre-cooled products. So after harvesting, you are pre-cooling your product and then transferring it to the cold storage. So you have two benefits of that. First, your shelf life of the product is increased through pre-cooling, and in the cold storage also your product is safe in the controlled environment. So the shelf life also increases its life.
So both are a bit different, although they sound same. Now, these are the examples of pre-cooling methods of fruits and vegetables which the farmers can practice. First is the cooling chamber. It is a slow pre-cooling method and it does not deteriorate rapidly. The product quality is not deteriorating very rapidly. Also, it is mostly used in strawberries, okay, because strawberries, they deteriorate very fast after harvesting. Second is the blast chilling, where high velocity cold air is circulated through the produce so that the heat is removed and the product remains in its fresh state. And most of the fruits and vegetables are cooled using this technique. Hydro cooling, hydro, as the word suggests, hydro cooling means cold water is applied to the produce through submersion or sprinkling. Okay, but it cannot be applied to all the vegetables or fruits who are susceptible to water decay. So it is applicable to only some fruits and vegetables, and especially berries. It cannot be done. Okay. Then comes the ice cooling, where ice slurries are crushed ice is used to cool down the produce, and it is especially used in broccolis, but not suitable for produce that can be damaged by low temperature, like tomatoes, cucumbers, onions, or products like berries which are susceptible to wetting. Then comes the vacuum cooling. A vacuum system evacuates the air in the chamber. Whatever air is circulating in the chamber, it works on the principle of vacuum, we all know, and it causes rapid evaporation of water on the surface of the produce, cooling it down. So this is also one of the good techniques, but these are the high-end techniques and not every farmer is going to use this. So we have to work on the models which enables farmers to use these techniques so that they can get better value for their produce. Now, we are talking about cold chains and why the importance of cold chain has resulted. It is basically because to reduce the food loss which we are seeing from so many years. See, out of the total food produced for human consumption, an estimated 14% is lost as per the FAO survey 2019. An estimated 17% is wasted, costing the global economy loss, which is an estimated $936 billion a year. So this is a huge loss, and that's why more emphasis is being paid on these cold chain systems to minimize the food losses at this level. Okay. Prashantji, I think just 4 or 5 minutes. Shall I continue or? Yeah, so thank you first of all, Dr. Pooja, because there are some very close concepts when we talk about cold chain, whether it is blast freezing, pre-cooling, or when it is cooling at what rate is required, whether it is hydro cooling or air cooling. So those concepts are important because there are pharma producer companies which are emerging right now and which are trying to engage into it, but they get confused that what is exactly which we have to do with either it is blast freezing or something else. So thank you for discussing those concepts. If you can briefly in 2-3 minutes, you can share something from the field experience that would be good for people or audience which are here. And then maybe 5 minutes we can take for Q&A session to conclude this webinar. So mostly if you can from the field experience, that would be good. Yeah, thank you, ma'am. Yeah, see, what actually happens in the field is because I am associated with the grassroots level farmer at the block level. So what I see is my area, there is no cold chamber actually present here in block level, but yeah, at district level, there is a ripening chamber which includes a cool chamber. It's not an entire cold storage, but a ripening chamber which involves the cooling chamber, grading and sorting area, and it's a huge hefty amount investment is required, an amount of 10 crores, and subsidy of rupees 3 crore is sanctioned for that project. So when we talk about such big units, no, not every farmer will go for like ripening chamber or cold storage. So what I feel is the best possible solution is for going to the integrated cold chain systems, where we can form a cluster of farmers groups so that they can share the resources, and in a block probably there is one cold chamber to start with, cold chain to start with, so that the farmers can, with minimum investment, they can maximize their returns, what they can get. Okay. Also, when we talk about the farm losses, the farmer is as Dr. C.B. Singh said, sir said that the farmers are more learned than who all are sitting in this webinar, including me.
Okay, so they know what to do and when to do and how to do. But the problem is that the first problem comes about awareness. Second is about the investment which is needed for such units to be built at the grassroots level. So I feel that what we can do is we can go for integrated cold chain systems at district levels and block levels, so that many farmers are benefited through single cold chain at block level. So these are my views. That as you said, that because you are at farm gate level, it is very much important that you set an example with a farmer so that people adopt it instead of kind of just suggesting them. So you have to develop some role model, as Mr. CB Singh, Dr. CB Singh also highlighted. So that was Yes. also a very good suggestion, ma'am. So anybody from the audience which do want to know from Dr. Pooja something which is related to technical aspect of cold chain, or something related to cold chain development, if Dr. Pooja can answer, that would be good. So anybody is interested, please raise your hand. I can see Vanshaj calls the hand, so I'm unmuting Vanshaj. Apologies, I could not unmute you earlier because of a long queue. So yeah, you can unmute Mr. Vansh. I think I've given you the access, please. Mr. Vanshaj, can you Thank hear? you. Thank you Yeah. so much, AEEE, for organizing this, and thank you to the previous speaker and the current one. Actually, you should have created a queue of questions so that people who ask the questions first get to ask the question first. Anyhow, Yeah. my question to ma'am is, ma'am, in your experience, which part of the cold chain receives the most losses? Is it the farm gate, or is it in transit, or is it in market? And second question is, when you talk about pre-cooling, can simple techniques like digging up a pit and covering it with hay and storing your produce primarily over there, like we recommend for onions, can simple techniques like that work where technology deployment is not possible? Thank you. Okay, so answering to the first part of the question, what I feel is, see, losses are at every level, may it be farm gate, may it be transit, or may it be at the end gate. But the maximum loss which occurs is, if you're talking about transit, which is not in the reefer vehicle, the maximum loss occurs in the during transition, because the heat generated by the atmospheric conditions and the heat of the vehicle, especially bananas and all the delicate fruits, maximum losses are encountered during the transit only. So I think one more suggestion I want to give through this webinar, that if, see, government is giving subsidies for cold storage, for ripening chamber, for cooling chamber, for packing house, all these things, but I think if some scheme is formulated for reefer vehicles, because most of the farmers who are practicing horticultural crops, taking it as their livelihood in hectares of land, I think reefer vehicles should also be included in the subsidy programs. Many of us must be knowing that the mission of integrated horticulture scheme is run by the government, where farmers are getting subsidies on construction of such units. So my suggestion would be to give subsidies on reefer vehicles, because maximum losses occur during the transit only. Like for an example, I would like to say that nowadays the tomatoes, yeah. Somebody is saying something? No. Please go ahead, Dr. Pooja. Please So, continue. Thank you, madam. the current example, if we see, the rates of tomatoes had risen to 200 rupees per kg. But if proper storage capacity and cold storage were there, so it wouldn't have been the losses for the consumer also and farmer also, because the abrupt rain conditions which occurred and the abrupt climatic conditions which occurred and which resulted in the damage of the crops when tomato was harvested, this could have been avoided, and so both would have been benefited, farmer also and consumer also. Answering to the second part of the question, like you set up that digging of pits and covering with hay or
for onions. Like I said, it will be also open area only, and in farm infestation and infections are increasing by these processes. These are the traditional methods. On small scale you can practice, but if you are growing tomatoes in nearly 5 hectares and 10 hectares of land, it becomes a very difficult part to follow these traditional methods. So you need to transfer on technology. So you should have some technology to save your hard earned result of all the 3 to 4 6 months what you are doing in the field, and to save your products. So this is my answer. Thank you, Dr. Pooja, and thank you again, Mr. Vanshaj, for your valuable question. Definitely, it is important Thank you, ma'am. that we have to identify where exactly the loss is happening most, so that more interventions can be designed. Second, I am unmuting Mr. Yogesh. I would like to highlight. Yeah. Highlight that there is already a subsidy scheme for reefer vehicles under MIDH. Yes. So there anybody is. who wants to use that, it is used, and the project that you highlighted in the PDF, the Kinnu project, which was undertaken by Yes. Carrier and NCCD, Yes. that was done under a reefer vehicle, and I was managing that project, so I know that. Okay, Thank you, sir, Mr. but in Vanshaj. all the states it's not available. Actually, MIDH scheme, like if we talk about MP, so on target basis these schemes come, and I think from last 3 to 4 years I haven't seen that scheme to be operational here. Ma'am, in that case, the state government has to give a target, has Okay. to give a target for deployment to MIDH, and then get a sanction. If the state does not give a target, then when the project report is submitted to the center, then it is not considered. So if Madhya Pradesh gives a target of, let's say, deploying 500 reefer vehicles, so when the project report is submitted through the state horticulture mission, in that case, the subsidy will be allotted, and it is allotted to all the states. Thank you. Okay, sir. So I'll be just suggesting this to Director of Horticulture here in Madhya Pradesh, and let's see. Yeah, thank you, Mr. Vanshaj, for highlighting that part, because MIDS does have a scheme for reefer vans, and even if you visit APEDA website, they also provide a scheme for reefer vans. So it is also through APEDA, and it's good that it has come up into this webinar so that people who are not aware, they can also explore about those schemes. So I would like to unmute Mr. Yogendra Shelke. He has raised his hand. So Mr. Yogendra, can you please unmute yourself? I've given access to you. Okay, thank you. I have a very specific question to the madam, that what are the various standards which are followed while constructing these cold storage facilities, and how much they are aligned to the international standards followed by the various countries? Like if I talk about our department, and so talking in the government terms, we follow the MIDH guidelines. I mean, somebody from NHB is here. I think he can throw more light on that. So whatever cold storage ripening chamber is being built in our state, it's we following the MIDH guidelines, and it's I think available. If anyone can add to that, it's readily available on NHB website. Okay, sure. So one more question is from Mr. Ankit Tritwal. So I'm unmuting Mr. Ankit. Yeah, Mr. Ankit, can you please unmute, and you have the access. You can ask your question. Mr. Ankit, you have access. You can unmute yourself. Can you hear Mr. Ankit? I think there's some issue, because I think you have the access to unmute yourself and discuss. So that is there. Thank you so much. So apart from that, because I'm not able to go through each and every questions which is raised on chat box, if anybody has any query further, they can write to AEEE, they can write to me as well. We'll try to connect with all the guest speakers, and we'll try to get answers from them. And if possible, if we get an update, we will definitely revert to you over mail. So right now, we are already running short of time. We are 10 minutes late. So
want to thank Dr. Pooja because there are some technical issues, technical concepts as well. When we talk about cold chain, there are some practical aspect also which was discussed by Dr. CV Singh and even by you as well, because you might be knowing that even at grassroots level, as Mr. Vansh has highlighted, that there is MIDH scheme, which is a central government scheme and is applicable throughout India. But due to some aspect or due to some challenge, it is not. It varies state to state. So definitely that also is an aspect which should be considered and which should be highlighted to government, so that there is a proper channel and it is being implemented also if it is a central government scheme. So overall, want to thank all the audience for being uh, uh, participant in this event and webinar. Hopefully it did add value to all the participants. We will try to publish some of the key takeaways from this webinar on our social media platform on LinkedIn. So thank you so much to all the guest speakers. Thank you to the participants, and we look forward to such participation in coming webinars or any event which is being organized by AEEE. So thank you to all and have a very nice day. So we can, I think, conclude and even leave the group. So thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Pooja.